Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो चौथा पार्ट है वो मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कैसे सिलेबस बनाया आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो सिलेबस में जो दे रखा है बीपीएससी का बिहार स्टेट का उसके सिलेबस को हर टॉपिक को मैंने एक एक यूनिट में बांटा है और उस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी बीपीएससी तैयारी के लिए मैंने एग्जाम दिलवाया था, उसके लिए जो है बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें बना हुआ है, अराउंड 5000 क्वेश्चंस बना हुआ है। यहाँ से भी जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, इसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पर उठा करके आप इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना तो आप इसमें इजी क्वेश्चन मिलेगा। बीपीएससी तैयारी के लिए जो मैं क्वेश्चंस का लेवल था वो इजी क्वेश्चंस था। और इसके लिए जो अभी बना रहा हूँ थोड़ा मॉडरेट बना रहा हूँ क्योंकि सिलेबस को फॉलो करते हुए बनाना था, तो सिलेबस में थोड़ा सा डिफिकल्ट किया। बाकी ये तो क्लियरिटी नहीं है कि वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अभी मैं जो बनाया हूँ थोड़ा मॉडरेट लेवल से बनाया हुआ हूँ क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स में। जैसे यहाँ से तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, ये पहला क्वेश्चन है कि डेटा लिंक लेयर से मैं कर बताता हूँ। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में प्राइमरी रोल क्या है डेटा लिंक लेयर का, तो मैं डायरेक्ट आंसर ओएसआई लेयर में डेटा लिंक लेयर का जो मैनेजिंग एंड ट्रांसमिटिंग विद इन द नेटवर्क सेगमेंट, मैनेजिंग डेटा ट्रांसमिशन विद इन द नेटवर्क सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन, इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन व्हाट इज़ द सॉकेट। व्हाट इज़ द सॉकेट, प्रोसेस कम्युनिकेशन में सॉकेट क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। in the process to process communication, what is the socket क्या होता है, तो it is end point sending or receiving data in the network. It is end point sending data, sending or receiving the data in the network. It is end point for sending or receiving the data in the network. What is the purpose of socket address, socket address का purpose क्या है, to uniquely identify the process on the host, to uniquely identify the process on the host. प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट में हम लोग जो है सॉकेट का यूज़ करते हैं। In the context of multiplexing, what does the upward multiplexing refers to, what does the upward multiplexing refers to, combining the multiple lower layer channel into the single higher layer channel, combining the multiple lower layer channel into the single higher layer channel। तो मल्टीपल लोअर लेयर चैनल से कंबाइन करते हैं मल्टीपल लेयर चैनल में, जिसको हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द which of the following is example of downward multiplexing। downward multiplexing example क्या है, dividing the physical medium into the multiple line time slot of the different device, dividing a physical medium into the multiple time slot for the different devices। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the which transport layer protocol provides the connectionless unreliable लाइट वेट डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। तो यूडीपी जो है कनेक्शन लेस और लाइट वेट डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइड करता है यूडीपी। ओके, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ what is the primary advantage of UDP over the TCP in certain application? Yes, UDP is suitable for real time and low latency application. UDP is suitable for real time and low level at latency. UDP is applicable low time and uh, low latency, suitable for real time low latency application. What does the TPDU stand for the context of data communication? TPDU, Transport Protocol Data Unit। TPDU, Transport Protocol Data Unit, फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, which application layer protocol is commonly used for transferring the web page, documents, resource on the world wide web? तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेल के लिए, टेलनेट जो रिमोट कनेक्शन के लिए होता है, और SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ओके, what is the primary function of FTP file transfer protocol? To transfer the file between client and server, to transfer the file between the client and server को हम लोग क्या बोलते हैं? What is the primary function of file
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसफर द फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूशन ऑन द रिमोट कंप्यूटर? टेलनेट यूज करते हैं। SMTP is primarily used for which purpose of the context of email communication? So SMTP is sending the email message from the client to server, between the client to server and between the server, ठीक है? तो SMTP यूज करते हैं। ओके, which protocol used to managing and monitoring the network device such as router and switch? SNMT, simple network management protocol। simple network protocol क्या करते हैं? monitoring the network device and router switches करते हैं। In SNMP, simple network management protocol, what is the primary role of SNMP manager? B, to control and configure the network device, to control and configure the network devices, to control and configure the network devices। SNMP का मतलब control and network device। What does term HTTP stands for the context of web communication hypertext transfer protocol? Which HTTP method typically used to request the data from the web server without causing any side effect? Get method जो है data request data from the web server without causing any effect। okay, 17, in FTP, what is the primary difference between active mode and passive mode FTP data transfer? Active mode requires the separate control connection while passive mode does not. Active mode requires the separate connection while passive mode does not, passive mode not। which SMTP command is used to initiate the email message transmission process from the client to server? Which SMTP command is used to initiate the email message transmission process from the client to server? ठीक है, तो client server hello, hello। Which SMTP command is used to initiate the email message transmission process from client to server? Hello। okay, what is the primary function of telnet client in the telnet protocol? टेलनेट क्लाइंट का टेलनेट प्रोटोकॉल में प्राइमरी फंक्शन क्या? रिमोट एग्जीक्यूशन कमांड ऑन टेलनेट सर्वर, रिमोट एग्जीक्यूशन कमांड ऑन टेलनेट सर्वर। In SNMP, Simple Network Managing Protocol version provides the authentication and encryption feature. Authentication and encryption feature to enhance the security. So version 3, SNMP version 3. In HTTP, what status code is returned when the requested resource is not found on the server? For not found है ना। HTTP, what status code is returned when requested resource is not found on the server? For not found। Which FTP mode should be used when transferring the data across a network with network address translation enable? Passive mode। Which FTP mode which FTP mode which with FTP mode should be used when transferring the data across a network with network address translation enable? Passive mode, ठीक है। In SMTP, which protocol is used for receiving the email message from the mail server? POP3, post office protocol version। in SMTP, well, which protocol is used to receiving the email message from a MAME server? Post office protocol। Which FTP mode allows for the secure and encrypted file transfer? FTPS, file transfer protocol secure। Which FTP mode allows for the secure and encrypted file transfer? So for FTP secure। In SNMP, simple network managing protocol, what is the primary function of SNMP agent? To manage and monitor the network device, to manage and monitor the network device। What is the main purpose of flow control in data link layer? What is the main purpose of flow control in data link layer? To ensure that the sender does not overwhelm the receiver with data, to ensure the sender does not overwhelm with the receiver with data। In the process communication, what is the socket address typically represented as? An IP address and port number। Socket address always combination of IP address and port number होता है। Which data is transmitted from the transport layer to the data link layer? What is the unit of data collected? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर टू डेटा लिंक लेयर पे जो होता है वो फ्रेम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होता है, और नेटवर्क लेयर पे जो होता है डेटाग्राम होता है। ओवरऑल सभी पैकेट होता है, ठीक है। In the network communication, what is the primary purpose of upwarding multiplexing? Upwarding multiplexing मतलब combining the multiple physical channel into the single logical channel, इसको upwarding multiplexing कहते हैं। Which of the following is example of downwarded multiplexing? Downwarding multiplexing क्या मतलब होता है? Splitting a simple network cable into the multiple। downwarding splitting the single network into multiple। upwarding तो combining the multiple data stream into the single।
Okay. In UDP, what is the primarily benefit of being contactless protocol? UDP is the faster and has lower overhead. UDP is a faster and has lower overhead. Which of the following is a characteristics of UDP? A minimal protocol overhead. Okay, what is the purpose of TPDU, Transport Protocol Data Unit? To manage flow control and error detection. To manage flow control and error detection. To manage flow control and error detection. Which application layer protocol is commonly used for sending email message between email client and server? Which application layer protocol is commonly used for sending email message between email client and server? SMTP, Simple Mail Protocol Transfer Protocol. ठीक है. What is the primary function of SNMP, Simple Network Management Protocol, in the management? Simple Network Management Protocol, to retrieve and manage the information from the network device. In the HTTP, what does the term stateless means in the context of protocol? In context of protocol, इसका मतलब होता है each HTTP request is independent and does not remember the previous state. Stateless का मतलब होता है every request is independent and does not remember the previous request. Which HTTP mode is typically used for secure the file transfer over an encrypted connection? FTPS, File Transfer Protocol Secured. In SMTP, what is the primary function of SNMP? To report on event or error condition to SNMP manager. Which FTP command is used to list the file and directories in the current directory on the FTP server? List. Okay, list करते हैं. Which HTTP method is typically used when the client want to send the data to the server, such as submitting the form, that is a post? In Telnet, what is the primary purpose of Telnet server? To execute the commands on the remote Telnet client. To execute the commands on a remote Telnet client. To execute the command on remote client. Which HTTP status code is indicate a successful request? Which HTTP status code is indicate a successful request and response in the HTTP protocol? 200. In the SMTP, what is the purpose of mail from command during the email transmission process? To specify the sender email address. What is the primary function of HTTP method protocol in web communication? To retrieve and display the web pages and resources. To retrieve and display the web pages and resources. In SNMP, what is the primary role of SNMP manager? What is the primary role of SNMP manager? To control and configure the network devices. Primary role of SNMP manager to control and configure the network devices. Which FTP command is used to change the current working directory on the FTP server? तो CD change directory करते हैं. In HTTP, what does the URL stand for? Uniform Resource Locator. What is the primary purpose of user agent header in the HTTP request? To provide the information about the client making requests. To provide information about the client making request. In SMTP, in SNMP TP is an SMTP. Which protocol is used for sending the email message from the client to server? SMTP. Send the message, email से मैसेज को सेंड करने के लिए क्लाइंट से सर्वर को SMTP यूज़ करते हैं. रिसीव करने के लिए POP3 यूज़ करते हैं. मल्टीपल डेटा डिवाइस में सिंक करने के लिए IMAP करते हैं. ओके. SMTP का जो होता है पोर्ट नंबर वो होता है 25 एंड POP3 का जो होता है 111 और IMAP का 143, HTTP का 80. ओके. विच SNMP वर्जन प्रोटोकॉल इम्प्रूव द सिक्योरिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन स्टेटस? वर्जन 3. तो ये हम लोग का टोटल जो हो गया आप लोग को 50 क्वेश्चन मैंने यूनिट कंप्लीट कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ला दे दूंगा. टाइम कम है तो यूनिट वाइज नहीं करेंगे. हर सब्जेक्ट से जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप लोग को दे देंगे. बाकी मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट में जाकर के, अब मेरे चैनल पे बहुत सारा मैंने वीडियो डाल रखा है, उसके भी प्लेलिस्ट को यहाँ पे मैंने डाल रखा है, सब्जेक्ट वाइज डाल रखा है. तो आप डेटा स्ट्रक्चर का, ओप्स का, उसके बाद फिर एक वेब टेक्नोलॉजी का, उसके बाद फिर कंप्यूटर नेटवर्क का, DBMS का, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका प्लेलिस्ट जरूर देख लेना. BPSC तैयारी के लिए मैंने बनाया था, लेकिन ये मोस्टली सिलेबस सेम है तो इसको जरूर आप लोग देख लेना. ये मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को. ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन देखो उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.